गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो बर्तमान आम देखा एनवायरमेंटल साइंस उपरे किसी क्वेश्चन मु आनी ता रिलेटेड। तो यार थियोरी बेसिकली 3टा पार्ट को मुझे कभर करी। तो तुम से 3टार थियोरी को देख गोटे हूँ इकोलोजी। इकोलोजी तुम इकोलोजी आ इकोसिस्टम आ गोटे हूँ पॉल्यूशन। तो तुम जानिच पॉल्यूशन आसो तुम एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, तुमर जो सॉइल पॉल्यूशन एगुड़ा सब पॉल्यूशन उपर अच्छी। तो बेसिकली एटा तुम +2 बायोलॉजी बही रू भी फॉलो करि पारो किंबा प्लस तुम एनवायरमेंटल साइंस तो तुम +3 तुम डिग्री रे पढ़ी थी ही एनवायरमेंटल साइंस। आउ बीएससी फास्ट सेमिस्टर तुम कोर पेपर 2 रे भी इकोलॉजी थिला सेठू मते तुम पाइजिवो। तेणु प्रथमे तुम थियोरी को कभर कर दे गुड़ाक आउ जो सैंपल क्वेश्चन अच्छी जो रिलेटेड तुम क्वेश्चन पढ़ा माने जो रिलेटेड यही क्वेश्चन पढ़ो बोली मु कहू नहीं एमसीक्यू ए रिलेटेड यही प्रकार क्वेश्चन आसबार चांस अच्छी। तेणु जो फिल्ड गुड़ाक तुम देखो तापाई मुझे किछिटा एमसीक्यू आनी। तो टाइम वेस्ट करवा नहीं आम कंप्लीट करदेबा वीडियोटा शीघ्र शीघ्र कहीं बहुत लंबा वीडियो होगा जाऊँगी। ता पूर्व जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छ मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवि से प्रीवियस क्लास गुड़ाक देखिपार एवं लाइक करिवो शेयर करिवो सब्सक्राइब न करथिला सब्सक्राइब करो मो चैनल को हैला। तो देखिबा नेक्स्ट आम फास्ट क्वेश्चन आम देखिबा देछि द वे इन व्हिच कार्बन इज यूज एंड रीयूज थ्रू द इकोसिस्टम इज कॉल्ड कौन द कार्बन साइकिल। सेकेंड क्वेश्चन देछि when any substance is added to the environment faster than it can be broken down, stored or converted to the non harmful form, it is called pollution है बी डी हूँ राइट आंसर pollution। तापर देखो 3 नंबर क्वेश्चन देछि इन ए फूड चेन द ऑर्गेनिज्म मोस्ट अफेक्टेड बाय बायो एक्युमुलेशन आर ए हबो हूँ टॉप कंज्यूमर। तापर 4 नंबर देखो 4 नंबर क्वेश्चन देछि व्हिच लिस्ट ऑफ टर्म इज इन द करेक्ट ऑर्डर द सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स जोटा अछि सी हबो राइट आंसर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम देन बायोम्स। एटा देखो पूरा तुमरो बीएससी फास्ट सेमिस्टर इकोलॉजी बही रु आसी क्वेश्चन हैला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देछि द नेचुरल वर्ल्ड दैट सराउंड an organism is called the organism's environment। एकदम इजी क्वेश्चन। तो देखो देयर वुड बी नो लाइफ इन द ओशन विदाउट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डैश ताको फाइटो प्लांटन बोली कह जाए एंड डैश जू प्लांटन। तो दीटा को फाइटो प्लांटन और जू प्लांटन है। तब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए देखो ए मॉडल दैट शो हाउ एनर्जी पास फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए फूड चेन। तब नेक्स्ट देखो द प्रोसेस शो इन द डायग्राम देखो ये गोटे डायग्राम दिया है एनर्जी जी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिसिला टेकिंग नेला ताको टेकन इन है गिवेन अफ कौन फूड आउ ऑक्सीजन ए हाँ तो फूड और ऑक्सीजन है। तो यहाँ तुम जहाँ भी देखो एक्चुअली कौन मझे गछटे अच्छी। तो ये चित्रटा को देखले कौन जन यहाँ हूँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को से ग्रहण कला ता बदलार से तार खाद्य भी देला एवं ता सहित से ऑक्सीजन को देला है मझे गछर चित्र अच्छी एनर्जी हिसाब से सनलाइट को नेला ऑटोमेटिक एटा फोटोसिंथेसिस जना पड़ुची है। तब नेक्स्ट देखो व्हाट डू इकोलॉजिस्ट कॉल द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट बिगिन विथ द सन एंड द पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट इज इन ए फूड चेन कॉल्ड एनर्जी फ्लो। तब 9 नंबर गला 10 नंबर रू देखिबा। तो 10 नंबर देखो गोटे देइछि इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन ए बायोम्स आर शोन इन द डायग्राम बिलो व्हिच इनफॉरमेशन इज रिप्रेजेंट इन द डायग्राम। तो देखो ये प्रथमे तो यहाँ को देखी जाओ तो ये प्रकार गोटे देइछि नाइट्रेट बैक्टेरिया एमोनिया है जो कि बैक्टेरिया रू कौन है से देखो फ्री नाइट्रोजन आसला इन एटमोस्फियर है ऊपर देखो प्लांट रिमेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट है नाइट्रेट को प्लांट कौन कला एब्जॉर्ब कला। तो बेसिकली यहाँ हूँ कौन डिकम्पोजर रिलीज ए मटेरियल दैट इज एक्टेड ओपन बाय अदर ऑर्गेनिज्म जोटा तुम यहाँ देखा पाच है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखा 11 नंबर देछि ए पिरामिड ऑफ बायोमास इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कौन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन इन बायोमास एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल फॉर द पर्टिकुलर टाइम। तार 12 नंबर क्वेश्चन देखा इकोलोजिकल पिरामिड कौन ऑल ऑफ एबव सब तक हम ताको स्क्रीनशॉट नहीं तुम लिखी दियो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो दैट इज ऑलवेज अपराइट किंबा प्रोड्यूसर ऑलवेज ऑक्युपाई द बेस ऑफ द पिरामिड। तापर देखो 13 नंबर क्वेश्चन कौन देछि द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी इज अवेलेबल एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेवल जोटा जो प्रोड्यूसर। तापर देखो 14 नंबर देछि टू एबायोटिक फैक्टर दैट अफेक्ट एन इकोसिस्टम आर सॉइल एंड वाटर। एटी देखिदेव ए बायोटिक देछि माने जहार जीवन नथिबो देखो प्रथम तो ए रे तुम एनिमल्स अच्छी माने जीवन अच्छी से सी रे वाटर सहित बैक्टेरिया दे देला एटा तो हेबो नाही। तापर डी रे बी रे दे देछि प्लांट और एनिमल्स एटा तो हेबो नाही। तो ए बायोटिक सॉइल और वाटर दुइटा ऑब्वियसली एटा ही ऑप्शन हबो। तापर नेक्स्ट देखो देछि ए कैटरपिलर ईट लीव्स एंड द बर्ड ईट द कैटरपिलर इन दिस रिएक्शन द बर्ड इज ए कोन सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट देखिए द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑलमोस्ट ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज सनलाइट। तब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए देखो एन एग्जांपल ऑफ ए बायोटिक फैक्टर इज इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज कौन ए ट्री। बायोटिक देखिए माने जार जीवन अच्छी देखीदेव कहार जीवन अच्छी और फॉरेस्ट रे कि अच्छी तो ट्री ऑब्वियसली हम। देखो एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ कौन लिविंग थिंग एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। 19 नंबर देखिए एन एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर इन पॉन्ड इकोसिस्टम एथिरे कंज्यूमर देछि और पॉन्ड रे देछि ताले ऑब्वियसली ए फ्रॉग ही हबो। 20 नंबर देछि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग एटा देखो डी हबो ऑप्शन लिविंग थिंग इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। 21 नंबर देछि एन एग्जांपल ऑफ ए बायोटिक फैक्टर इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज कोन फिश। तब देखो एन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर इज ए कौन मोस। तो 23 देछि बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर द सोर्स ऑफ द फूड होची डिकम्पोजर। 24 देछि इन एन एनर्जी पिरामिड द लोएस्ट लेवल हैज कौन मोर एनर्जी देन द ट्रॉपिक लेवल। 25 देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी स्टार्ट सक्सेशन इन ए हैबिटेट तो सी होची पायोनियर कम्युनिटी। 26 देछि द इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पेसीज इज कॉल्ड कौन ओटेकोलॉजी। देखो एटा होची बीएससी फर्स्ट सेमिस्टर क्वेश्चन इकोलॉजी रो ओटेकोलॉजी सिनेकोलॉजी सब थिला हैला। तापर देखो 27 नंबर ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर इन इज नोन आज कौन बायोटिक कम्युनिटी। तापर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ऑब्वियसली 10% आम जान 10% नियम अनुसार है। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 वेल नोन इकोसिस्टम इकोलॉजिस्ट इज कौन ईपी ओडम। तब देखो 30 नंबर देछि द मैक्सिमम सल्फर रिजर्वयर इज कौन रॉक। 30 नंबर सला पर 31 नंबर देखिबा 31 नंबर देछि इन ए फूड वेब हायनास एंड द वल्चर्स आर कौन सेकेंडरी कंज्यूमर। तापर देखो 32 देछि ग्रेट सोना एक मिनट सोना ओवर जा सोना ओवर जा सोना सोना। तापर द ग्रेट बैरियर रीफ एलोंग ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज जान कौन जोड़ा होची इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमरो द आन इकोसिस्टम 33 देखो आन इकोसिस्टम इज नॉट ए क्लोज सिस्टम। 34 देखो आन एक्वाटिक इकोसिस्टम विथ मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज कौन इस्चुआरी। तब देखो 35 देखो प्राइमरी ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रास इकोसिस्टम इज कौन अपराइट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन बेस्ट बी स्टडीड बाय कौन एल्टोनियन पिरामिड।
तब देखो 37 देखा डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए इकोसिस्टम इज कौन जोटा होची ए ऑप्शन लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो 38 देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली यूज सनलाइट आज इट सोर्स ऑफ एनर्जी जोटा फंगस। 39 देखो ए ब्रॉड बेस ऑफ पिरामिड शेप ए स्ट्रक्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन दैट इज कौन ग्रोइंग रैपिडली। तापर 40 देखो द फॉस्फोरस साइकिल लाक डेस कंपोनेंट जो अन एटमोस्फेरिक कंपोनेंट। 41 देखो द इकोलॉजिकल पिरामिड वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कौन जोटा चार्ल्स आल्टन। तब 42 देखो देइछि एंड सीक्वेंस ऑफ स्पेसीज थ्रू व्हिच द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन एन ए कम्युनिटी passes इज कॉल्ड फूड चेन। 43 देइछि हाउ मच ऑफ द केमिकल एनर्जी विदिन द हर्बिवोर्स इ टिश्यू बिकम्स केमिकल एनर्जी विदिन द कार्निवोर्स टिश्यू जोटा 10%। 44 देइछि इकोलॉजिकल फैक्टर इम्पोर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस इकोसिस्टम इज किंबा आर कौन हम ऑल ऑफ द एबव। तुम साउंड कमिए दो है नेक्स्ट होची 45 देखो द एनर्जी यूटिलाइज बाय द लिविंग वर्ल्ड इज प्राइमरीली कौन होची लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देइछि इफ द प्रोड्यूसर इज एब्सेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर्स जोटा होची हमर 46 रे देखो राइट आंसर होची बोथ ए और बी हबो हला। तापर देखिबा हमें 47 देखिबा तो 47 देइछि एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम कौन यूनिडायरेक्शनल। 48 देइछि पिरामिड ऑफ नंबर फॉर फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज ए और बी बोथ हबो राइट अपराइट और इन्वर्टेड। तब देखो 49 देइछि इन एन इकोसिस्टम द पॉपुलेशन ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर इज लार्जर देन द प्राइमरी कंज्यूमर। तब देखो 50 क्वेश्चन देइछि देखो इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम मेंटेनेंस लाइज इन जोटा होची बोथ ए और बी हबो साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स फ्लो ऑफ एनर्जी। 51 देइछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कम्स फ्रॉम आउटसाइड जोटा होची एनर्जी। तो 52 रो देखिबा ए पॉन्ड इज ए कौन ए नेचुरल इकोसिस्टम। देखो तापर 53 रु टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड कौन बायोमास। तापर 54 देछि ट्रांसड्यूसर ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन इज कॉल्ड कौन प्रोड्यूसर। तापर नेक्स्ट देछि 55 रु इन पैरासाइटिक फूड चेन द पिरामिड ऑफ नंबर इज कौन इन्वर्टेड। तापर 56 देछि अर्थ इज एन ओपन सिस्टम ऑफ कौन एनर्जी। 55 देछि मोस्ट ऑफ द अर्थ वाटर इज कौन लॉक ऑफ आज सॉल्ट वाटर और आइस। तब देखो 58 देछि फॉस्फोरस साइकिल इज इन द फॉर्म ऑफ कौन PO4 2-। तब 59 देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटम मोस्ट ऑफन लिमिट द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम जोटा होची कार्बन। 60 देछि मोस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन द सरफेस वाटर ऑफ द लेक एंड ओशन इज बाय होची फाइटोप्लांक्टन। तापर आ गोटे देखिबा एटा तो हमें देखिले इकोसिस्टम उपरे वर्तमान इकोलॉजी रो किछि क्वेश्चन देखिबा हमें व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डज टेरिटोरियलिटी प्रोड्यूस जोटा होची क्लम्प्ड हला। तब देखो सेकेंड देछि द स्पेसिफिक एम ऑफ इकोलॉजी इज टू स्टडी ऑल ऑफ एबव सब हबो राइट आंसर ठीक अछि सब देखि देबो हला। तब 3 नंबर देछि चूज द फैक्टर दैट इज अनलाइकली टू लिमिट population growth so all are factor that could limit population growth। तो देछि which of the following factor will affect population growth rate जो all of these हबो। 5 देछि at a symptom stage the population is कौन stabilized। 6 नंबर देछि geometric growth produce what type of population growth curve जो J shape। For human population the highest growth rate occurs in which continent जो Africa।
नहीं देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट माने गोटे को छाड़ले बाकी तीनटा तुम ठीक थी तो ऑप्शन नंबर डी देख द पाराबोलिक ग्रोथ कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट सर्वाइवरशिप कर्व तो यहाँ गोटे छाड़ी दियो बाकी सब ठीक अच्छे है ता देख 9 नंबर द मोर्टालिटी रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग ए टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व इज कौन लोअर आफ्टर द ऑर्गेनिज्म बिकम्स एस्टाब्लिश्ड 10 नंबर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी तापर 11 नंबर देखो द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी व्हाट टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व डू ह्यूमन हैव जोटा टाइप 1 तापर देखो in an organism has a population of 600 and in 30 years has a population of 1200 then what is the organism doubling time 30 years if an organism began with 10 individual and went through 25 generation then how many individual would be the final generation जोटा कि आमर 3.4 into 10 to the power 8 हम राइट आंसर से फॉर्म रे हबो हला व्हिच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पुअर वेजिनेशन इन डिजर्ट जोटा कि लो रेनफॉल नेक्स्ट होची देखो द क्लोजली रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर पॉपुलेशन बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड आर डेजिग्नेटेड एज सिबलिंग स्पेसीज नेक्स्ट देखो द एबुडेंस ऑफ ए स्पेसीज population within its habitat is called niche density सबू मु तुम बीएससी फास्ट सेमिस्टर तुम कोर पेपर 2 रे ऑलरेडी थ्योरी क्लास रे मैं पढ़ाई एगुड़ा सबू थ्योरी क्लास रू ही आसी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ हैज स्लो एंड ग्रेजुअल फॉर ए लॉन्ग पीरियड बट इट टर्न शार्पली अपवर्ड जोटा कि डी हम राइट आंसर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन देन व्हेन द डेथ रेट ड्रॉप्ड देखिए इन वाइल्ड पॉपुलेशन इंडिविजुअल मोस्ट ऑफन शो ए डेथ पैटर्न ऑफ द डिस्पर्सन जैसे क्लम्प्ड जोटा कि डिस्पर्सन और डिस्पर्सल आसला क्वेश्चन देखो ए पॉपुलेशन वुड ग्रो एक्सपोनेंशियली जोटा कि इफ देयर वेर नो लिमिटिंग फैक्टर तापर 21 देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो हाउ बायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर can affect an organism जोटा कि monarch butterfly live only where there are milkweed plant for food 22 देखिए when birth rate equal death rate ताले the size of the population remain constant next देखिए a broad base pyramid shape age structure in characteristic of population that is growing rapidly तापर देखो 24 नंबर देखिए म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटो कोऑपरेशन आर कौन पॉजिटिव इंटरैक्शन तापर नेक्स्ट देखो एटा गोटे देदेला है फॉलोइंग डायग्राम द शोइंग द वे ऑफ पॉपुलेशन डिस्पर्सन एक्स वाई जेड तो ये देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न फॉर डिस्पर्सन ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन जोटा होचे हमर एक्स हम राइट आंसर एटा तुम देखीदेव सब प्लस 2 रे दिया तुम बीएससी फास्ट सेमिस्टर रे कोर पेपर 2 रो प्ले लिस्ट देखीदेव से डिस्पर्सन डिस्पर्सल ये सब मुझे पढ़ाई है तब नेक्स्ट देखो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज रिप्रेजेंट बाय कौन dn by dt दैट इक्वल टू rn तब देखो नेक्स्ट देखिए पॉपुलेशन वेयर प्रोडक्टिव एनिमल्स ऑकर्स इन लार्ज नंबर इज ऑफन टर्म आज कौन ग्रोइंग नेक्स्ट देखिए देखो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन रिप्रेजेंट डेंसिटी तब देखो 29 देखिए बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज पॉपुलेशन इंडेक्स तब नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा 30 रो पॉपुलेशन वाज टर्म आज सेल्फ परपेचुएटिंग यूनिट बाय कौन माल्थस 31 देखिए पॉपुलेशन डायनामिक्स इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ दिस सब ठीक अच्छे इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिक्रीज इन पॉपुलेशन चेंज इन पॉपुलेशन तो देखो किलिंग एन ऑर्गेनिज्म फॉर फीडिंग इज कौन प्रिडेशन तब देखो 33 देखिए एसोसिएशन बिटवीन बार्नाकल एंड लिमोलस इज कमर्शियलिज्म नेक्स्ट देखिए सिग्मोइड कर्व इज कौन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दीजिए
which of the following factor does not play an important role in increasing the biodiversity? जोटा से introduced species. तो गोटे को छाड़ देले बाकी तीनटा होची तमरो important role play करे increase in diversity है biodiversity. 36 देखिए the organization which protect the trade in endangered species at international level is जोटा से CITES. तापर देखो मोस्ट बायोडाइवर्सिटी जोन आर कौन वेस्टर्न घाट एंड द नॉर्थ ईस्ट रीजन. द एंडेंजर्ड प्लांट टैक्सस बाकाटा बिलोंग्स टू कौन जिम्नोस्पर्म. नहीं देखो 39 देखो आर्थ समिट ऑफ रियो डी जेनेरियो 1992 रिजल्टेड इन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट देखो द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन अगस्त 2002 इन जोटा जोहान्सबर्ग. तापर नेक्स्ट देखिए द नंबर ऑफ इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन इंडिया आर जोटा दीटा. देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे केबे होची 29 डिसेंबर. नेक्स्ट देखिए 43 रु देखो द टर्म हॉटस्पॉट for higher diversity ecological region was coined by किए मेयर. तब देखो द नंबर ऑफ प्रोफेशनली मैनेज जू एंड जूलॉजिकल पार्क वर्ल्ड वाइड इज कौन 800. तब द नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इन मे 2012 अनुसार है केते अच्छी 14. तब नेक्स्ट देखो 46 रु देखो देइछि वीड आर an important for cultivated plant as they are carrying excellent genetic material. तो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन मेंटेन्स कौन बोथ ए और बी रेड डाटा बुक भी हम रेड लिस्ट भी हम. तो देखो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेसीज एलोंग द ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट्स कम्युनिटी इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी. 49 देखा ए स्पेसीज स्प्रेड ओवर द लार्ज ट्रैक्ट with variety varies environmental condition will have higher genetic diversity. Dodo, an extinct flightless bird, belongs to Mauritius. तापर देखो कांग्रेस ग्रास इज कौन अच्छी जोटा पांथेनियम हिस्टेरोफोरस. 52 देखिए देखो देखिए द ओनली सर्वाइविंग हैबिटेट ऑफ द एशियन लायन इज एशियाटिक लायन इज कौन जोटा कि आम गिर फॉरेस्ट रे देखा जाए गुजरात रे है यहाँ राइट आंसर है ना. यहाँ हूँ मोस्ट टाइम रे क्वेश्चन बहुत थर आसे एशियाटिक लायन उपरे. तापर नेक्स्ट देखो द कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ ब्लू व्हेल इज कौन हम जोटा स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड लो रिप्रोडक्टिव रेट. तब देखिए बफर जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज व्वेयर ह्यूमन एक्टिविटी लिमिटेड है. बफर जोन बिल्कुल ह्यूमन एक्टिविटी करा जाए नहीं है जिते तार बफर जोन बाहर को जाए से ह्यूमन एक्टिविटी धीरे धीरे तार किछटा रूल एंड रेगुलेशन अच्छी है. तब नेक्स्ट 55 देखो प्रोजेक्ट मस्क बियर वाज लॉन्च इन 1974 इन जोटा केदारनाथ सेंचुरी उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट देखिए देखो 56 देखो रेयर एनिमल हिस्पी here here is found in कोडी मानस नेशनल पार्क. तब देखो द स्टेट which have all the 3 species of crocodile are started saving crocodile project in Kerala. तब 58 देखो द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी-arid ट्रॉपिक इज सिचुएटेड इन हैदराबाद. तब देखिए 59 द नेशनल एनिमल ऑफ USA इज कौन जायंट पांडा. 60 देखिए व्वेयर एमंग द फॉलोइंग विल बी फाइंड पिक्चर प्लांट जोटा हमारे थर डिजर्ट रे देखा जाए. तापर देखो आउ गोटे टॉपिक अच्छी जोटा कि आमर पॉपुलेशन उपरे सॉरी पॉल्यूशन उपरे है. तो देखो पॉल्यूशन उपरे कौन क्वेश्चन आछि व्हाट एस्पेक्ट ऑफ लंडन 1952 स्मोग एपिसोड prompted industrialized countries to regulate industrial air emission जोटा इट contribute to the death of the thousands of peoples.
तापर देखो 2 नंबर देखिए द अर्थ ओजोन लेयर दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन स्टिकिंग द प्लैनेट इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो स्ट्राटोस्फीयर रे देखा जाए है ओजोन लेयरटा स्ट्राटोस्फीयर रे देखा जाए तब देखो द पैटर्न ऑफ द एटमोस्फियरिक कंडीशन फाउंड अक्रॉस द रिलेटिवली लार्ज जियोग्राफिक रीजन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो क्लाइमेट तब अंडर नॉर्मल एटमोस्फियरिक कंडीशन व्हाई द वर्टिकल मिक्सिंग एंड डिस्पर्सन ऑफ एयर पोल्यूटेंट अकर्स जो वार्म एयर एट द सरफेस राइजेस तो नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब ए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट जो ऑप्शन नंबर सी देखो ए पोल्यूटेंट दैट डेवलप थ्रू chemical reaction with other pollutant or chemical normally present in the atmosphere तब 6 नंबर क्वेश्चन देखो पोल्यूटेंट दैट प्रोड्यूस एसिड रेन इज इन रूरल एरिया सच ए होबार्ड ब्रोक वेयर फाउंड टू कम प्राइमरी फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो पोल्यूटेंट ट्रांसपेरेंट थ्रू अर्बन एरियाज 7 नंबर क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द प्रिंसिपल हेल्थ concern of ozone depletion in the stratosphere जो कैंसर एंड अदर डैमेज ऑफ द स्किन तब देखो नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ राइजिंग लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमोस्फियर जो ए हूँ इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर तब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखा डीडीटी एंड जोड़ा क्लोरडेन are agricultural chemicals that were once used widely but have now been banned in the United States. They belong to a class of compounds called chlorinated hydrocarbon. तापर एसिड रेन कज कौन ऑल ऑफ दिस सब एसिड रेन हुए जोटा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट किलिंग फिश ग्राजुअल किलिंग ऑफ लेक तब CFCR कौन ऑल ऑफ एबव कज ऑफ ओजोन डिप्लीशन प्रिपेलेंट ऑफ एरोजल डिस्पेंसर तापर फोमिंग एजेंट इन जोटा स्टाइरोफोम तापर देखो 12 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तार गोटे हूँ इनकरेक्ट ताकू छाड़देले बाकी सब ठीक है वी प्रेजेंटली लैक ऑफ टेक्नोलोजी टू प्रिवेंट एसिड रेन एटा हूँ संपूर्ण भूल आम पाखे टेक्नोलोजी अच्छी है तापर 13 नंबर क्वेश्चन देखो information that is based upon the belief cultures and value of aboriginal peoples and their thousands of years of experience in their environment is called traditional ecological knowledge तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 14 नंबर क्वेश्चन देखो साइंटिस्ट use dash to track changes in ecosystem by comparing the result of investigation done by the different time जोटा होची डी ऑप्शन हम डी इकोसिस्टम मॉनिटरिंग तापर देखा 15 नंबर क्वेश्चन देखा 15 नंबर क्वेश्चन देखी dash give scientist information about ecosystem before an event occur that is baseline data तब देखो 16 नंबर क्वेश्चन ए रिपोर्ट दैट आउटलाइन हाउ एन एक्टिविटी विल अफेक्ट द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड जोटा अन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बायोडाइवर्सिटी तो डी हूँ नॉट ट्रू तो डी नंबर ऑप्शन को छाड़देले बाकी सब ठीक अच्छी तापर 18 नंबर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर मेक्स ए स्पेसीज सस्पेक्टेबल टू एक्सटिंक्शन जोटा हूँ बी हूँ फीडिंग एट हाई ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन तापर नेक्स्ट देखो ए स्पेसीज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर इज कॉल्ड जो एंडेंजर तापर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स तो देखो नॉन ऑफ दिस कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं ताले तुम ये देखो यही चार्टाक स्टेटमेंट तुम पढ़ी नब है चार्टाक ठीक अच्छी तापर 21 नंबर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट describe biodiversity जोटा द डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज इन एन एरिया इंक्लूडिंग देयर जीन्स पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी
22 नंबर देखिए व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो गिव्स द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ निसे जोटा होची हमर कोन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर निसे स्पेशलिस्ट are better equipped to survive a major environmental catastrophe that generalized. 23 देखो which of the following is a typical case selected adaptation जो होची parental care of young. तब देखो मैं देखिबा 24 देखो area set a site to protect example for the different habitat in the province are called जो होची ecological reserve. तर biologist might use days to mate animals in zoo, then release the young into the wild जोटा होची a captive breeding program. तब 26 देखो पोल्यूशन इज डेथ ऑफ एनवायरनमेंट जोटा होची कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट. एक्युमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कौन बायोमैग्निफिकेशन. 28 नंबर क्वेश्चन देखो ओजोन डेप्लीशन इज अकर्स ड्यू टू नॉन ऑफ दिस कहारी भी नुहे है कौन होता तुम देखीदेव. 29 दीजिए हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटी इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फिक्स नाइट्रोजन अवेलेबल टू द प्राइमरी प्रोड्यूसर जोटा होची ऑल ऑफ एबव सब तक ठीक. यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इंक्रीज कल्टिवेशन ऑफ लेगुम तापर डेलिबरेट बर्निंग ऑफ फील्ड. तो 30 दीजिए ओजोन इज कौन बेनिफिशियल इन द अपर एटमोस्फियर. तापर देखो 31 दीजिए यूट्रोपिकेशन इज इन लेक्स इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कौन जोटा होची सी होची न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट सच एज नाइट्रेट एंड फॉस्फेट रन ऑफ फ्रॉम द लैंड. तब 32 दीजिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच शो ए रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड द इफेक्ट इज इट दैट हैज ऑन द एनवायरनमेंट जोटा होची मोर वाटर ड्रेन अवे जोटा होची सॉइल वेज अवे है. ऑप्शन नंबर डी होची राइट आंसर. तब देखो 33 देखो सम पॉसिबल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न इंसेक्टिसाइड आर लिस्टेड बिलो. व्हेन these insecticide are used which property help to keep the environmental pollution at the lowest level जोटा होची broken down by soil bacteria. तापर देखो which process does not result in the return of carbon dioxide to the atmosphere जोटा होची photosynthesis by the green plant. तापर देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट आर क्रिएटेड बाय कौन ह्यूमन्स. 36 देखिए CO इज ए पोल्यूटेंट बिकॉज इट कंबाइन विथ HB बा हीमोग्लोबिन सहित. तापर नेक्स्ट देखो 37 देखो व्हिच टाइप ऑफ पोल्यूशन इज कॉज बाय स्कूटर जोटा होची बोथ एयर जोटा होची एयर पोल्यूशन है बोथ कॉज सॉरी एयर पोल्यूशन हो है. तापर नेक्स्ट देखो एयर पोल्यूशन इफेक्ट आर यूजुअली फाउंड ऑन द लीव्स. तापर नेक्स्ट देखो 39 देखो द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ DDT इज कौन जो डाइक्लोरो डिफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है प्रायतः यहाँ आसे DDT रो फुल फॉर्मटा आसे है. तापर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज कौन मिथेन. तार 41 देखिए द गैस which was released in भोपाल गैस ट्रेजेडी was मिथाइल आइसोसियानेट. पोल्यूटेंट कॉजिंग लीफ कर्लिंग इज कौन SO2 जोटा सल्फर डाइऑक्साइड. तब द डिकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट अंडर नेचुरल प्रोसेस इज इंक्लूडिंग बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन. तापर देखो 44 देखिए द एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ फर्टिलाइजर इनटू वाटर बॉडीज रिजल्ट इन द कौन यूट्रोफिकेशन. तापर देखो 45 देखिए चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो देखो गोटेटा होची तुम सी होची इनकरेक्ट स्टेटमेंट ताकू छाड़ी देले बाकी तीनटा होची करेक्ट स्टेटमेंट है ताकू तुम पढ़ी नब जोटा होची मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विषय देइची है मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेस आउ यूज ऑफ इनसिनेरेटर is crucial to disposal of hospital waste है. तब नेक्स्ट देखो BOD स्टैंड फॉर BOD रो फुल फॉर्म कौन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड.
तापर 47 देछि ह्यूज अमाउंट ऑफ सेवाज इज डम्प्ड इनटू द रिवर द बीओडी विल कौन इंक्रीज। तो 48 देछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग impurities is earliest to remove from waste water जोटा जी सस्पेंडेड सॉइल। 49 देछि जोटा जी इटाई डिजीज इज कॉज बाय द पॉइजनिंग ऑफ कौन कैडमियम। तर बीओडी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज कौन लेस देन डार्टी वाटर। 51 देछि द मोस्ट आउटस्टैंडिंग डेंजर एट प्रेजेंट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बीइंग ऑन अर्थ इज कौन रेडिएशन hazard। 52 देछि कैटालिटिक कन्वर्टर आर fitted into automobile to reduce emission of harmful gases। कैटालिटिक कन्वर्टर चेंज अनबर्न हाइड्रोकार्बन इनटू कोथि तैयारी करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 53 दीजिए मोस्ट डेंजरियस रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट इज कौन स्ट्रोटियम 90। 54 दीजिए आल्गाल ब्लूम इज ए लेक कौन ऑल ऑफ द एबव सबुटा थाए है। ताने 55 दीजिए कंटामिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मेटेरियल्स आर डेंजरियस बिकॉज इट इज कौन जीन म्यूटेशन एटा कौन कर बिकॉज एटा कौन करता है कज करता है जीन म्यूटेशन कज करता है। तो देख या सहित टोटाल एनवायरमेंटल स्टडी जहाँ भी तुम जो क्वेश्चन रो अच्छी सैंपल क्वेश्चन ताको मु पढ़ेली टिके टायर्ड फील करुच्ची कहीं झील सेपट पार्टी करूला एपटे माने डिस्टर्ब होता तेणु ता भितर मु दौड़ी दौड़ी मु ए घर से घर दौड़ी दौड़ी पढ़ुची मो झील मो पछे पछे दौड़ूची है तेणु तुम मैंने बुझीपार मो सिचुएसन आज नेक्स्ट क्लास आउ गोटे नुआ चैप्टर आनी से थैंक यू।